Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, all my dear brothers and sisters. And this is a great occasion where I'll be sharing details about zakat calculation and purification of the shares. We'll go into some nitty-gritties, but before that, let's just wait for a few moments so that a lot of people are still joining in. So let them all come through, and then inshallah we'll start off with the conversations. All right. I want all of you who are already there, can I request you all to please type in the chat box which language would you prefer? आप Urdu, Hindi prefer करेंगे, English prefer करेंगे? So please type which language are you comfortable with, so that I can, inshallah, be more biased towards the language that you prefer. So just type in the chat box. Right. Okay. Perfect. Mix sounds good. All right. All right. Perfect. Jazakallah. Thank you so much. So I've got a sense of going English, right? All right. Perfect. Okay. So people are still pouring in. And so just in case you want some of your friends, relatives, neighbors, etc., to attend this is available on Facebook Live, right? So FB, let me just type it for you. You can just share this with what's going on. So that's the link for Facebook Live. You can just ask people who might not be able to join at some point of time, or who have not registered and you would like them to attend. Please share this link. They can go on video live and they can see this entire session. And that would be a great way to spend a Sunday, inshallah, learning about how to go about doing the calculations and so on. All right, perfect, excellent. All right. Perfect. Okay. So should we begin or should we wait? All right, we have the quorum, 40% of the Zoom limit is reached. So let's begin. Let's begin. All right, a little bit about myself. मेरा नाम अशरफ मोहम्मदी है और मैं इदाफा इन्वेस्टमेंट्स का CEO हूँ, और पिछले कई सालों से मैं ये काम अंजाम दे रहा हूँ. वेल्थ क्रिएशन द शरिया वे हमारी कंपनी का और अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि हम किस तरीके से शरई नुक्ते नज़र से फ्रॉम अ शरिया पर्सपेक्टिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करवाना, वो कैसे हम मुमकिन करवा सकें. ये काम, ये जिद्दोजहद में हम कई सालों से लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज एन अमेजिंग फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, राइट. हमारा एक मकसद है, तो हम क्या करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं. हम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करवाते हैं इक्विटी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, portfolio management schemes के अंदर. So there are Sharia compliant portfolio management schemes available in the market. So उसके अंदर हम facilitate करवाते हैं.
लोन प्रोडक्ट्स, अगर किसी को कोई लोन, बिजनेस लोन के अंदर या गाड़ी के लोन के अंदर इंटरेस्ट है, तो उस किस्म के, या फिर कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन की जरूरत होती है शरई नुक्ते नजर से, इंटरेस्ट फ्री तरीके से, तो हम वो चीज मुहैया करवा लेते हैं। अगर कोई चाहता है कि हम लोन दें, if someone wants to offer a loan in a sharia compliant way, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हम फैसिलिटेट करवाते हैं रहबर के थ्रू से, और दूसरी कुछ एजेंसी है, P2P लेंडिंग एजेंसीज है, उनके जरिए से शरिया कंप्लायंट तरीके से। रिटायरमेंट प्लानिंग शरिया कंप्लायंट तरीके से कैसे हो सकता है, टैक्स प्लानिंग एज शरिया कंप्लायंट एज पॉसिबल। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारा मकसद ये है कि हम अगले बचे हुए 10 साल में, यानी 2030 तक इंशाअल्लाह 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, और उनको हम कन्वेंशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो किसी ने फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाए होंगे, किसी ने पोस्ट ऑफिस में, किसी ने पीपीएफ में, किसी ने पता नहीं बॉन्ड्स में, कहां पर, राइट, वो तमाम जगहों से जहां वो हराम इनकम जनरेट होती है, वहां से उनको ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के माहौल में लेकर आए, जहां पर 6,500 कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, उनमें से 1400 कंपनीज के लगभग शरिया कंप्लायंट है। वो ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे, शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे, शरिया कंप्लायंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करे, लोन ले, लोन दे तो शरई नुक्ते नजर से, अपनी रिटायरमेंट प्लान करे तो शरई नुक्ते नजर से, और टैक्स प्लानिंग भी उसी तरीके से करे। तो हमारा मकसद यह है कि 1 करोड़ लोगों को किस तरीके से इस जगह पर इस तरीके से लाया जाए। इसके लिए हम जिद्दोजहद करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप सबसे इस मुबारक महीने में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप दुआ करें कि अल्लाह इन काम को पूरे हमारी टीम की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारे एसोसिएट्स की तरफ से, हमारे जो एजेंट्स हैं उनकी तरफ से, हमारे कस्टमर्स की तरफ से, जो बहुत लिमिटेड स्कोप के अंदर भी सबर से जमे हुए इतने सालों से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सफर को हमारे साथ तय कर रहे हैं। तो इन सब के लिए आप दुआ करें, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग एक्ट ऑफ सबर फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको बहुत, हजारों प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हम सिर्फ सिलेक्टेड काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा बनाता है, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर जिस तरीके का पैसा बनाया जा सकता है वो दुनिया के अंदर और किसी प्रोडक्ट में नहीं बनाया जा सकता है, राइट। इट्स अ ह्यूमंगस मनी मेकिंग मशीन, लेकिन चूंकि वो शरिया कंप्लायंट नहीं है, हम हमारे स्टेक होल्डर्स उससे दूर रहते हैं, फ्यूचर से दूर रहते हैं, शॉर्ट सेलिंग से दूर रहते हैं। और उसी तरीके से इंडिया के अंदर कुछ बेहतरीन कंपनीज हैं, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, क्योंकि ये सारी कंपनी शरिया कंप्लायंट है, हम उससे दूर रहते हैं, राइट। तो ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को जाने देना, ये तकवा नहीं है तो और क्या है। रमजान ये महीना तकवा का है, और जब हम अपने आप को इन तमाम चमकती हुई चीजों से बचाते हैं तो ये तकवा नहीं है तो और क्या है। तो आप सबको सलाम जो इस तरीके से इस अंदाज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तकवा इख्तियार करते हुए। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इस तकवे की कड़ी को, ये तकवा की जो लिंक है, इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और उसको देखते हैं कि ज़कात, ये इन्वेस्टमेंट के जरिए से ज़कात देकर किस तरीके से हम अपने तकवा को और बढ़ा सकते और बढ़ाते हैं, अपने आप का एक प्योरिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाली नुक्ता, क्वेश्चन मार्क, ज़कात क्यों, why do we have to give zakat, why are we required to follow this pillar of Islam। So इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सहारा लेना होगा कुरान का, हदीस का, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज़कात क्यों हमें अदा करनी होती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें जो है
ये एक स्कॉलरली काम होता है। हमारे उलेमा है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। कुरान की तफसीर, हदीस के बारे में थोड़ा सा एक्सपाउंड करके बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं, समझाते आए हैं, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। तो मुझे ये सारे इश्यूज में बहुत गहराई में नहीं जाना है, बस ऊपरी तौर पर मोटे मोटे अंदाज में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें इन इस उन्वान के ताल्लुक से। तो सबसे बड़ा रीजन, जब हम हर एक इंसान जब कुरान को अप्रोच करता है तो वो अपने पर्सनल एजेंडा से अप्रोच करता है। हमारा सबका एक पर्सनल एजेंडा होता है, राइट। हम हिदायत के लिए तो हर कोई अप्रोच करता है, लेकिन वो हिदायत किस डायरेक्शन में। तो सिंस आई एम समवन वो जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, मैंने अपना जो है इकोनॉमिक स्टडी किया है, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो जब वो बैकग्राउंड से आते हैं तो हमको ये सारी चीजें, जैसे एक साइंटिस्ट है जब वो कुरान को अप्रोच करता है तो वो साइंस की 800 आयात देखकर पूरी तरह से एक्साइट हो जाता है, राइट। उसकी खुशी का कोई बयान नहीं होता है जब वो साइंस से रिलेटेड आयत कुरान के अंदर देखता है, जब बायोलॉजी से रिलेटेड, जब ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड। तब उसी तरीके से इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाला जब मैं बंदा हूं और मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी आयतें जब देखता हूं तो मेरा एक्साइटमेंट जो है वो अगले लेवल पर चले जाता है। तो सूरह हशर के अंदर चैप्टर 59 वर्स 7 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब हमने शहर के लोगों के पास से, यानी जो लोगों के पास से सेटल्ड एस्टेब्लिश लोग हैं, उनके पास से माल लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, राइट। तो हमने ये इसलिए किया कि ये माल सिर्फ कुछ चंद लोगों के बीच में सर्कुलेट ना होते रहे और गरीब, फुकरा, मिस्कीन लोगों तक वो पहुंचे। तो यहां पर क्लियरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ज़कात का मकसद सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है। आज का सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस क्या है? वेल्थ के अंदर डिस्पैरिटी। दुनिया का 1% इंसान, 1% of humanity, right, owns wealth which is double the wealth of 690 billion people on planet Earth. 730 करोड़ की हमारी आबादी है, सॉरी 730 करोड़ की आबादी है। उसमें से 690 करोड़ लोगों का जो वेल्थ है, उससे दुगना वेल्थ दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है। ये प्रॉब्लम को कुरान एड्रेस करता है ज़कात के थ्रू से, कि अगर ज़कात का चलन हो जाए तो उसका नतीजा क्या होगा कि ये जो 1% लोग के पास बेशुमार दौलत है, वो दौलत 690 करोड़ लोग जो है दुनिया के, उन तक पहुंचना शुरू होगा, राइट। सो ये एक मकसद है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे और फरमाते हैं सूरह तौबा 9 नंबर की सूरह और 61 नंबर की आयत में, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैटेगराइज करके किस किस्म के लोगों को ज़कात देनी है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ये जो आयत है इसमें कि गरीब, फकीर, मिस्कीन, ये लोग जो है, जो आमिलीन है, जो लोग जो है ज़कात के कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हुए हैं, राइट। और जिन लोगों का दिल दीन की तरफ राग़िब हुआ है, right, those whose hearts are inclined towards Islam, in other words those who are considering accepting Islam or are already people who have accepted Islam, वो लोग जो है, और उसके अलावा वो जो स्लेव्स है, जो कर्ज में है, और वो ट्रैवलर है, ये तमाम लोगों के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि माल जो है, ज़कात जो है, वो इन लोगों का हक है, राइट। ज़कात इन लोगों को दी जानी चाहिए। तो ये जो है ये कैटेगराइज करके दे दिया गया है कि किस तरीके से किसको ज़कात कैसे और किस
दी जानी चाहिए। और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे और फरमाया कि एक चीज जो वेल्थ के कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो एनुअल रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अंदर से मैंने लिया हुआ है। 2005 के आसपास का ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ही ये आया था। 2005-2006 की ये बात है, जिसमें उन्होंने ये बताया गया कि अगर 225 रिचेस्ट अमीर तरीन लोग जो दुनिया के हैं 225, अगर वो अपने वेल्थ के ऊपर 4% वेल्थ टैक्स दे दे तो उससे क्या होगा? उससे इस दुनिया के अंदर हंगर, भुखमरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए लोगों को मीलों चल के वो जो है मटका उठाकर जो है पानी लाना पड़ता है, दैट प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम और हेल्थ केयर का प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 225 richest people of the world 4% वेल्थ टैक्स दे दे तो दुनिया में एक भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको पीने का साफ सुथरा पानी ना मिले। दुनिया के अंदर एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो हेल्थ केयर न मिलने की वजह से मरे, और कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो अनपढ़ होगा, इलिटरेट होगा। So the problem of hunger, drinking water, health care, and illiteracy would all get resolved in one shot if just 4% is contributed by the 225 richest people on planet Earth. Now, we did some calculations and we said that the same effect could be achieved if 360 people gave 2.5% as zakat on their wealth. 360 लोग 2.5% अपने माल पर जक़ात दे दे तो दुनिया से ये चारों प्रॉब्लम्स का खात्मा हो जाए। That's the power of this institution of zakat. इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है ये, राइट? और इसके बारे में जो इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जो इस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, वो सही तरीके से अपनी ज़कात निकालता है, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 261, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल दे रहे हैं एक मक्के के दाने की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि द सिमिलिट्यूड, द पैराबल, वो मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका ऐसा है कि एक मक्कई का दाना, एक कौन वो बोए, जिसके एवज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 उसकी मक्कई देगा, 7 ईयर्स देगा। हर ईयर के अंदर 100 दाने होंगे, और अलग अगर अल्लाह चाहे तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकता है। यानी मिनिमम 700 टाइम्स 70,000% रिटर्न तो कंफर्म, और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना चाहे उतना रिटर्न दे सकता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ब्लेसिंग्स है। 700 टाइम्स प्लस 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 हमको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर देगा, सवाब देगा, रिटर्न देगा, बरकत देगा हमारी जिंदगियों में, हमारे वक्त में, हमारे पैसों में, राइट? तो ये सारे बेनिफिट्स है ज़कात देने के। मुझे इस पे और ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज और बता दूं कि ये ज़कात देना जो है ये हमें कई तरह के नुकसान से बचे, राइट? सो अगर कोई आफत आने वाली हो हमारे ऊपर, आजकल जो आफत फैली हुई है कोरोना का, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम्स है, आज हम दिल्ली का हाल देख लें, दूसरे छोटे छोटे शहरों का हाल देख लें, राइट? और ये बताया जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स आम तौर पर कम से कम 8 से 10
साल पहले तक तो यही ट्रू था कि 75% ऑफ ज़कात थ्रू आउट इंडिया बॉम्बे से डिस्ट्रीब्यूट होता था। मतलब बॉम्बे चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, तो यहाँ से जो लोग ज़कात देते थे वो बाकी के हिंदुस्तान के अंदर वो स्प्रेड होता था, राइट। ये रीजन ऐसा है जहाँ बहुत ज्यादा पैसा, फाइनेंशियल कैपिटल है। So since Bombay was a financial capital, and of course major cities like Kolkata, Chennai, Bangalore, Delhi, of course, वो भी, लेकिन Bombay in a very big way. And as a result of that, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, because इतना ज्यादा contribution यहाँ से consistently जाता रहा है, ये city ने prosper किया है। और ऐसी जब बलाएं आती है, आफत आती है, तो एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस, यहाँ पर मुझे किसी ने गुजरात से फोन करके बोला, सूरत में हमारी एक टीम है, वहां से उन्होंने फोन करके बोला कि बॉम्बे में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना सूरत और अहमदाबाद में है। तो मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो ऑक्सीजन भी तकरीबन तकरीबन मिल रहा है, और बड़े कोविड सेंटर्स है जहाँ पर सारी चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल है वगैरह। तब उसने मुझे कहा, और तब मेरे लिए ये वापस एक एक एक, एक रिमाइंडर की तौर पर आया कि बॉम्बे वाले जो है वो बहुत खैर का काम करते हैं, और उसकी वजह से अल्लाह ने बचाया। आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह कीप इट दैट वे। अल्लाह हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरीके से तौफीक दे कि हम बढ़ चढ़ कर खर्च करें अल्लाह की राह में, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर किस्म की परेशानियों से बचाए, और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको बढ़ चढ़कर उसका सवाब भी दे। तो दिस इज अ लिटिल बिट व्हाई ज़कात। ज़कात के ये बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैंने कुछ आपसे डिस्कस किया जो मेरे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर हम इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में रिलेटेड, तो ये सारी चीजों को हमें जहन में हमेशा रखना चाहिए। ऑल राइट, किन चीजों पर ज़कात देनी है, ये सारी बातें आपने सुनी होगी, राइट, आपने पढ़ी होंगी, या आपको सारी चीजें पता है, बट जस्ट एक याद दिलाने के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपके पास कैश है तो कैश के ऊपर ज़कात होगा, बैंक बैलेंस के ऊपर ज़कात होगा, अगर आपके पास सोना चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात होगा। ऑब्वियसली एक निसाब का लेवल जो है, एक थ्रेशहोल्ड अगर आप फुलफिल करते हैं तब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो वो थ्रेशहोल्ड क्या है, अगर हम सोने का, गोल्ड का थ्रेशहोल्ड लें तो 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड, अगर हम सिल्वर का थ्रेशहोल्ड लें तो 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर, राइट। सो गोल्ड का थ्रेशहोल्ड तो बहुत ज्यादा हो जाता है आजकल, तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाख के, 2.25 लाख के करीब हो जाएगा, उससे ज्यादा 3 लाख के ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर हम सिल्वर का थ्रेशहोल्ड 52 तोला ले तो दैट वर्क्स आउट टू अराउंड 40,000, 35-40,000 और 45,000, तो अराउंड दैट मच। तो अगर तो इस लिहाज से अगर हमारे पास 45,000 रुपीज है, if we own 45,000 rupees worth of wealth in whatever form, then we are eligible to give zakat। तो हमको zakat देनी है। और किन चीजों पर zakat, सोना चांदी, कैश, बैंक, वो तो हमने देख लिया। अगर हम बिजनेस करते हैं और हमने होलसेल मार्केट से सस्ते में सामान खरीदा, उसमें से कुछ हमने बेच दिया, कुछ हमारे पास बच गया, तो ये जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी मार्केट वैल्यू, सेलिंग प्राइस पर हमें ज़कात देनी होती है, राइट। उसके अलावा रियल एस्टेट, तो अगर हम किसी मकान में रहते हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं, अगर हम कोई ऑफिस यूज करते हैं, फैक्ट्री यूज करते हैं, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। अगर हमारे पास और कुछ रियल एस्टेट है, जगह, जमीन, फ्लैट्स, बंगला, घर, जिसको हमने रेंट पर दे दिया है और उस पर हमें रेंटल इनकम आ रही है, तो वैसी जगहों पर ज़कात नहीं। लेकिन अगर हमने कोई जगह ली है प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, उसको हमने लिया 25 लाख रुपए में, जिस दिन वो 45 लाख 50 लाख होंगे हम बेच देंगे, और उस लिहाज से हमने उसको इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो वैसी इन्वेस्टमेंट को कैश का रिप्लेसमेंट माना जाएगा और उसके ऊपर ज़कात देना होता है। उसके अलावा हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो अगर हमारे पास जमीन है, वो जमीन के ऊपर कोई उपज है, वी आर ग्रोइंग सम क्रॉप ऑन इट, एंड इफ इट इज नेचुरली इरिगेटेड, अगर उसको बारिश का पानी भरपूर मिलता है, तो वैसी सूरत में हमें उसके ऊपर जो प्रोड्यूस हमारा बनता है, जो 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 क्रॉप हमें मिलता है,
उसके ऊपर 10% वो हमें ज़कात के तौर पर दे देना है। लेकिन अगर हमें पानी का इंतजाम खुद करना पड़ा तो उसके ऊपर 5% हमें ज़कात देनी होगी, मतलब 5% वो क्रॉप हमें ज़कात में दे देना होगा। उसी तरीके से मवेशियों के ऊपर, कैटल एंड गोट, शीप एक्सेट्रा, ये सारी चीजों के ऊपर, तो बकरियों के ऊपर, दुम्बों पे 40 पर एक 40 दुम्बों पर एक दुम्बा जो है वो ज़कात में देना होता है, और उसमें से मरियल दुम्बा नहीं, अच्छा तगड़ा ताजा वाला दुम्बा, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। 30 कैटल के ऊपर एक कैटल ज़कात में देनी होती है, ऊंट का भी वही हिसाब है। तो ये सारी चीजें हमें जो है मानना, जो है ज़कात के कॉन्टेक्स्ट में पता हो, राइट। अब फर्ज कीजिए, एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कभी आ सकती है। अगर आपके गांव में कोई जमीन है, राइट, और आपने सोचा कि चले अब ये कोरोना वोरोना बॉम्बे में चल रहा है, पूना में चल रहा है, चलो हम अपने गांव में जाकर खेती बाड़ी करते हैं। आपने वहां पर खुदाई शुरू किया, प्लाव करना शुरू किया, और प्लाव करते 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 सडनली ट्रैक्टर जो है उसके अंदर से खन करके आवाज आई। तो आप लोग सब चौंक गए, वर्कर्स वगैरह, आप लोग दौड़ते हुए गए कि क्या हुआ। तो वो ट्रैक्टर जब खुदाई कर रहा था, प्लाविंग कर रहा था, तो एक आयन का बहुत बड़ा चेस्ट, एक बहुत बड़ी पेटी जो है वो हाथ आ गई, वो लगी जोर से, राइट। तो ये आपके पुरखों की जमीन है, पुरखों की जमीन में पुरखों ने कभी किसी जमाने में कहीं कुछ गाड़ के रखा था। अब आपने जब वो जमीन से निकाला और उसको खोला, तो अंदर चमकते हुए सिक्कों का अंबार है, राइट। सोना, चांदी, जेवरात, ये सारी चीजों से भरा हुआ है। कई सालों से वो उस जमीन के नीचे था, आज आपने कोरोना की वजह से उसको वो आपको मिल गया। आमीन बोलिए, आमीन, सबको आमीन, चैट करिए आमीन, राइट। सो आपको ये मिल गया, राइट। अब इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये ट्रेजर आउट ऑफ द ब्लू आपको मिला है, इसके ऊपर फ्लैट 20% आपको अल्लाह की राह में खर्च करना है। 80% आपका, 20% अल्लाह की राह में खर्च करें। तो जो जो आमीन बोलेंगे, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा 5-7% मेरे लिए भी रख लीजिएगा, मैं ब्रोकर हूं ना, तो हमेशा वो अपना परसेंटेज, राइट। एक्सीलेंट, ओके। सो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स की। तो हमारे पास फर्ज कीजिए म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी शेयर्स है, हमारे बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। किसी वजह से जब मुझे वो एक जमाने में जब हमने टेलीफोन लाइन लिया था, तो मेरे पास से उन्होंने डिपॉजिट मांगा। टाइम पर हम लोगों ने 10 लाइन लिए थे, तो मैंने 20,000 रुपए तो सिर्फ डिपॉजिट में देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन वो डिपॉजिट पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दैट टेलीफोन लाइन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अब तो कम हो गई है लाइंस, बिकॉज अब मोबाइल पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। बट उस किस्म से हमें कभी मजबूरी में डिपॉजिट्स करने पड़ते हैं, राइट। तो वो टाइप के डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, गोल्ड्स है। कभी कोई बड़े बिजनेसेस होते हैं जो बिल्डर्स होते हैं, या फिर कोई जैसे कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, टेंडर्स वगैरह होते हैं, जिसमें हमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है वो इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ एज अ डिपॉजिट रखना होता है। तो ये सारी डिपॉजिट्स और इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, सारे के ऊपर, हलाल हो हराम हो, ये सेकेंडरी चीज है। अगर ये आपके पास सेविंग्स हैं तो इसके ऊपर आपको जकात निकालनी है। जकात कैसे निकलेगी, ये सारा का सारा फिलहाल हम इसको देखेंगे एज रिप्लेसमेंट ऑफ कैश। अगर ये डिपॉजिट में नहीं होता तो कैश की शक्ल में होता, तो वैसी सूरत में इसके ऊपर स्ट्रेट अवे 2.5% हमें जकात दे देनी है, राइट। इसके अलावा और कौन सी चीजों पे हमें जकात देनी है, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें छूट जाती है कभी कभी। बॉम्बे में कम से कम ये सिलसिला है, जिसको हम कहते हैं बिस्सी, बिस्सी, वीसी, आई डोंट नो इफ इट्स द सेम थिंग, बट यहाँ बिस्सी बोलते हैं। इट इज एन इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ चिट फंड्स, राइट। चिट फंड्स है, लेकिन ये इनफॉर्मल। अक्सर लेडी एंटरप्राइजिंग लेडीज जो होते हैं वो अपने एरिया में चलाते हैं। सारी लेडीज के पास से 1,000-1,000, 5,000-5,000 अपने हस्बैंड्स के पास जो उनसे पैसे मिलते हैं, उसमें से वो बचाकर बिस्सी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से लेडीज करते हैं माशाल्लाह।
राइट, और ऐसे वो सेविंग, फिर कभी किसी को जरूरत पड़ी तो वो उसमें से वो पूरा फंड जितना होना चाहिए वो, तो ये बिस्सी चिट फंड का एक सिस्टम रहता है, तो अगर आपने चिट फंड के अंदर इस तरीके से कोई आपका इन्वेस्टमेंट है और जितना पैसा आपका लगा हुआ है जो आगे जाकर आपको मिलने वाला है, वो जो है उसके ऊपर भी ज़कात आपको देनी होती है। आपने बहुत सारे लोगों को दरिया दिल है आप, राइट, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, आपका दिल नरम होता है, आप सबको पैसे दे देते हैं, बोलते हैं भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है ले लो, 50,000 रुपए की जरूरत है ले लो, राइट, मुझे भी 2-5 लाख रुपए की जरूरत है, अगर कोई इस तरीके से देना चाहे तो आई एम अवेलेबल, मुझे चाहिए, राइट, तो ले लो। तो ये इस तरीके से जब लोग पैसे आप दे देते हैं एज लोन, तो कितनी बार आप इतना ज्यादा दे देते हैं कि आपको गिनती नहीं रहती है कि भाई कहाँ कहाँ है, तो वो गिनती करना शुरू कर दीजिए प्लीज, क्योंकि वो जो लोन्स आपने दिए हैं उसके ऊपर भी आपको ज़कात देनी होती है। अगर आपको पता है कि ये जो लोन मैंने पिछले 25 साल पहले दिया था और वो अब आने वाला नहीं है, 25 साल बहुत लंबी अरसा है, गुजर गया, 25 years have passed, now this amount is not going to come back, you are absolutely sure about it, then it's a different thing, otherwise you need to account for that और उसके ऊपर आपको ज़कात देना है, राइट। ये एफडी वगैरह तो हमने देखा। अच्छा, आपने सेविंग्स की है, आप एक अलग अकाउंट आपने बना कर रखा है, छुपा के रखा है वो अकाउंट, राइट, वो अकाउंट के बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके हस्बैंड को या आपके वाइफ को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, राइट, या हज के लिए, तो चूंकि दुनिया से तो ये अकाउंट छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह को और आपको तो पता है, तो ये अकाउंट में भी जो चुपचाप चुपचाप आप सेविंग्स कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसके ऊपर भी ज़कात देनी है, राइट। तो कोई ऐसी चीज चूक ना जाए, उसके लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर डिडक्शंस होंगे, तो आपने ये सारी चीजें लिस्ट कर ली, उसके बाद एक डिडक्शन कि भाई अगर आपका कोई पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन, नॉट बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, आपने किसी से लोन लिया है वक्ती तौर पर एंड यू वांट टू, यू आर प्लानिंग टू रिटर्न इट बैक एज सून एज यू हैव द मींस, और आप अपने पर्सनल काम के लिए आपने एक ऑटो लोन ले लिया है, या इस तरीके से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत आ गई, इंटरेस्ट पे ही सही, लेकिन वो लोन ले लिया आपने अनफॉर्चुनेटली, तो वैसे सारे पर्सनल लोन्स को आप अपने वेल्थ में से डिडक्ट कर लेंगे, और जो बैलेंस होगा सिर्फ उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है, राइट। बिजनेस लोन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पर्सनल लोन्स, उसको आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। So these are the things which attract zakat, and it's a very simple thing. All of these things, replacement of cash, except cattle and crop, of course. Everything else, replacement of cash, valued as cash. Zakat has to be given at 2.5% on that value. Clear? Now let's talk about what we are assembled today for. Zakat on shares and other securities. So there are two ways of doing this. One is the portfolio value method. So you take this as a replacement of cash. आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, 50,000 आपने वहां डाल दिया है, 2 लाख रुपए के आपने शेयर्स खरीद दिए, ये 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अगला मार्केट जब कभी भी चलेगी, आपको ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आपने 2 लाख रुपए लगाया है, उसकी वैल्यू जिस दिन 2.5 लाख रुपए हो जाएंगी, आप बेच देंगे, राइट, और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये शेयर्स, इस किस्म के जो शेयर्स है, इसके मार्केट वैल्यू के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 2.5% ऑन दैट शेयर्स एंड दैट्स इट, 2.5% ऑन सिमिलरली ऑन दैट म्यूचुअल फंड एंड दैट्स इट। बट अगर आप मोहम्मद अनवर की तरह इन्वेस्ट करते हैं, एनीवन रिमेंबर्स हु इज मोहम्मद अनवर? मोहम्मद अनवर, इफ यू रिमेंबर हिम, से yes on the chat box. All right. Yes. Great. So if you are an investor like Muhammad Anwar, who has decided never to sell his shares in Wipro, right? 40 साल, 41 साल हो गए, लेकिन अभी भी बिल्कुल डटे हुए हैं, नहीं बेचेंगे, right? So if you are like Muhammad Anwar, then situation थोड़ा सा अलग होगा. Now you are a long
actually a very, 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 very long-term investor in that particular company. So चाहे वो मोहम्मद अनवर हो, चाहे वो अजीम प्रेमजी हो, right? इन लोगों को अगर उनके पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स को रिप्लेसमेंट ऑफ कैश के तौर पर नहीं देखेंगे. उनका ये गोइंग बिजनेस है, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस फॉर देम, और वो उन तमाम चीजों पर ज़कात नहीं देंगे जो काम पर लगी हुई है. तो उनके एसेट्स पर कोई ज़कात नहीं है, उनकी फैक्ट्री, उनकी ऑफिस, उनका गेस्ट हाउस, उनकी गाड़ियां, उनके कंप्यूटर्स, कोई ज़कात नहीं है उन पर, राइट. सिमिलरली उनके कैपिटल पर भी चूंकि वो कैपिटल लगा हुआ है तो कोई ज़कात नहीं, लेकिन उनको ज़कात सिर्फ और सिर्फ उनके करंट एसेट्स पर देना होगा. तो करंट एसेट से क्या मुराद है? अगेन सेम थिंग, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल जो लोगों से पैसे वसूल करने हैं, expenses, raw materials, right? Raw materials. So you have bought raw material. For example, Wipro तो raw material Wipro के लिए क्या है? Oil है, oil extraction, vegetable oil extract करता है, soap, shampoo, creams बनाता है, right? लेकिन अगर कोई दूसरा बिजनेस करता है, कोई कपड़ा बनाता है, उसके लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, पीपी, तो ये सारी चीजें, तो वो रॉ मटेरियल को भी गिनेगा, उसके ऊपर भी ज़कात, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी ज़कात, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ज़कात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ज़कात. तो ये सारे करंट एसेट्स के ऊपर ही उसको ज़कात देना है, राइट. तो यहाँ पर पूरी कंपनी के मार्केट वैल्यू पर ज़कात नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ अपने बैलेंस शीट को देखेगा. बैलेंस शीट पे वो ये देखेगा कि पूरा एसेट्स, टोटल एसेट इज फॉर एग्जांपल 10,000 crore rupees, right? 10,000 crore rupees is the total assets of the companies. Out of that, current asset is 25,000 crore rupees. So cash, investment, account receivables, all of that put together, raw material, inventory, 25,000 crore rupees. So he will take just that 25,000 crore rupees, right? And then divide that 25. So I'll just show that to you over here. So he will take that 25,000 crore rupees, divide that by total number of shares issued. So let's say the total number of shares issued is 100,000 crore rupees. 100,000 crore rupees, right? So now ये सिर्फ कितना हो गया? ये 25% हो गया of the total assets of total number of shares issued, right? So again we divide this and come to a conclusion as to. So what we are trying to determine right now is what is the current asset per share. The value of the current asset per share is how much? So that is 0.25. Clearly 0.25 is the net current asset per share. Now what he will have to see is कि भाई मेरे कितने shares हैं, right? तो वो अगर मेरे सिर्फ 1000 shares हैं, so how much does that work out to? 250 rupees. So on my shares, I am just entitled to pay 250 rupees of zakat. That's it. If I am a long-term investor, that is how I calculate my zakat, right? So ये दो बहुत अलग-अलग चीजें हैं. अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर, ट्रेडर 5-7 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे फिर बेच देंगे, ये आपका टाइम फ्रेम है. Then you follow the portfolio method. You go by the portfolio value of your shares and mutual funds and 2.5% on that. So that could be say 10 lakh rupees. What is 2.5% on 10 lakh rupees? Please write down in the chat box. 0.5% of 10 lakh rupees.
Can you give an example for long? Come on, there are 77 people. 25,000, right? So 25,000 is the zakat if you are a trader, because this is replacement of cash for you. But if you are a long-term investor like Azim Premji is in Wipro, or like other people are in their respective companies, and if they are kind of willing to give zakat, then this is the kind of zakat that they would pay on the company that they are running personally. Is this clear, everyone? Everyone with me? Perfect, 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 perfect. Excellent. 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 Right. All right. Now, let's look at the Sharia compliance issues. So if you have any questions, inshallah, we'll answer all the questions one time after the end of this program. I will not leave this session without answering all your questions, inshallah, not a problem, right? So, and I would request, if there are some people who have logged in on Facebook, I would request the admins to please capture questions from there and post it over here so that we cover all of those questions and nothing is missed out. Okay. Right. Okay. So Saroj bhai, you are asking for one more example for portfolio method. Portfolio method, very simple, right? If I have shares worth 4 lakh rupees, right? So 4 lakh rupees, 2.5% works out to how much? 10,000 rupees. So 10,000 rupees is my zakat. Very simple, right? But if I have invested 4 lakh rupees in a company and I'm planning to stay invested for the rest of my life, and inshallah, when my children, when I'm dead and gone and my children inherit my wealth, they will kind of get it. That's my perspective. मैंने उसको अर्धांगिनी बना लिया है, right? नहीं छोड़ूंगा. तो वैसी सूरत हाल में ये जो है, आप सिर्फ करंट एसेट्स देखेंगे. करंट एसेट्स पर शेयर कितना वर्कआउट होता है, दैट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू ओन, एंड उतना ज़कात आपको देना है. तो बहुत छोटी रकम हो जाती है बनिस्बत ये बड़ी रकम के. अच्छा, देयर आर सम स्कॉलर्स, यू नो, तो ये मैंने 2-3 बार सुना है. आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, राइट? बट उनका ये कहना है कि भाई जिस तरीके से हम अगर घर में इन्वेस्ट करते हैं और घर को हमने रेंट पर दे दिया है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है. रेंट अगर हमें मिलती है और लाखों रुपए की रेंट मिली और वो लाखों रुपए पूरे साल हमारे पास जमा रहे, यू नो, lakhs and lakhs of rupees of rent collected from those real estate properties, and then that stays with us for over a year, then we are required to pay zakat on the rent that is saved and not on the property because it's rented out. So on similar lines, if we have invested and if we are getting dividends, right, so we need not pay any zakat on those shares. Rather, if those dividends are substantial, अगर बहुत ज़्यादा वो dividend है और वो बच जाता है और निसाब के लेवल को क्रॉस करता है, तो वो डिविडेंड के ऊपर हमको सेविंग्स के ऊपर zakat देनी है, not on the shares. But I kind of slightly differ from that, and I go with the opinion of the scholars who say that zakat has to be paid not on dividend but on the current assets. थोड़ा सा calculation करना पड़ता है, simple calculation है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, right? So let's move on and understand कि ये calculation कैसे किया जाए. So there are a lot of questions. Inshallah, I'll come back to the questions once we go through this entire presentation. So inshallah, yeah, I will come back to all of those questions. Nisab se related, Mohammed Anwar se related. Right. All right.
सो क्विकली हम थोड़ा सा शरिया रूल समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट का कि कैसे इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लायंट होता है. Any company which is in the production and sale of liquor, cigarettes, vulgar entertainment, or interest, lending and borrowing and interest, they are all haram to invest in. Similarly, there are certain areas like sugar, hospitality, etc., haram to invest in all of these companies. And then there are certain financial criteria. So if debt in a company is less than, it should be less than 25% of total assets. Anything more than 25% of total assets, we cannot invest in that. Similarly, अगर कोई कंपनी का interest income plus interest bearing investments 3% से ज्यादा है as compared to total income, you cannot invest in that. Cash and receivables should be less than 50% of total income, otherwise you cannot invest. And then you have to do the purification of the haram income, right? So this is where the whole purification thing comes into place. Purification, zakat और purification of shares, ये दो चीजें क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट, एक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट क्रीप हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा अपना इन्वेस्टमेंट मेसी हो जाता है, राइट? ये जो इंटरेस्ट इनकम है, इसकी वजह से पूरा इन्वेस्टमेंट मेसी हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, राइट? तो इसको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, इसको क्लीन करना पड़ता है. तो ये क्लीन कैसे करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. समझने की कोशिश नहीं, हम समझते हैं, राइट? ये क्लीन करने का अगेन पुराने जमाने में स्कॉलर्स ने एक सिंपल सा तरीका दिया था, वेरी सिंपल प्रोसेस. व्हाट वाज द प्रोसेस? दे सेड जस्ट सी हाउ मच डिविडेंड यू हैव अर्न्ड, मल्टीप्लाई that by the interest income and divide that by the total income. So for example, you have earned a dividend of, say, 1,000 rupees, right? You find that the interest income of the company is 1,000 crore rupees, and the total income of the company is, say 100,000 crore rupees, 1 lakh crore rupees. तो अब क्या होगा? What is the outcome? कौन बताना चाहेगा? 1% निकालेंगे. 1%. जी, 1% into exactly. It 100 comes out rupees. 10 rupees. It comes out to 10 exactly. Sorry, 100,000 है ना, 1 lakh. So 1,000 into 1,000 divided by 1 lakh is 10, right? So आपका पर्जिंग अमाउंट क्या होगा? केवल 10 रुपए होंगे, राइट? यू जस्ट नीड टू पे 10 रुपीज. ये डिविडेंड के ऊपर है. तो ये जो है एक पुराना तरीका था जो उलेमा ने बताया था. आज भी बहुत सारे उलेमा इसी चीज को फॉलो करते हैं कि भाई डिविडेंड जितना आया, अगर डिविडेंड आया तो उसके ऊपर आपको प्योरिफिकेशन करना है. अगर डिविडेंड कोई कंपनी नहीं देती है तो मजा करो, नो प्रॉब्लम, नथिंग, राइट? नो डिविडेंड, no purging, no purification. That was the logic by people in the past. लेकिन फिर क्या हुआ? हमारे स्कॉलर्स जो है, हमारे उलेमा, ये लोग अब माशाअल्लाह एकदम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बन गए. इन्होंने सीए बनना शुरू किया, एमबीए बनना शुरू किया, लॉयर बनना शुरू किया. ये जो है बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंच गए. जस्टिस तकी उस्मानी पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस बन गए शरिया कोर्ट के. उसी तरीके से दूसरे स्कॉलर्स दुनिया भर में जो है ये सारी बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करके दे वेंट एट अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल. तो अब ये बेचारे मदरसे में बैठ के फतवा लिखने वाले उलेमा की तरह अब ये नहीं सोचते थे. अब इनके पास एक वर्ल्ड व्यू था और ये चाहते थे कि ये अब पूरे चीज को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखें. तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये शुरुआत की
कि इन्होंने ये नए नॉर्म्स डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स के अंदर, जब वो शरिया कंप्लायंस और प्यूरिफिकेशन और ये सारी चीजें देख रहे थे, वहां पर ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, एंड दैट्स हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुक इट अप, राइट? सो नाउ द लेटेस्ट नॉर्म्स आर अ बिट मोर स्ट्रिंजेंट. तो देखते हैं अब दूसरा ऑप्शन क्या है. ये ऑप्शन अपनी जगह पर वैलिड है, हम इसको तस्लीम करते हैं, उलेमा का ओपिनियन है, तो वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट दैट. Those who need to follow this can continue to follow this. Completely nothing wrong with that. This is an opinion and you can keep following that. Second option जो AOF है, Accounting and Audit Standards है शरिया compliance का, Islamic Finance का जो Accounting and Audit Standards Board है, वो AOF जो बहरीन में बेस्ड है, ये जो ग्लोबली स्कॉलर्स का कंसेंसस है उसको फॉलो करती है. उसको इन्होंने स्टैंडर्ड की फॉर्म में बनाया है, ये दुनिया भर में वो शेयर करते हैं सारे स्कॉलर्स के साथ, और हर कोई तकरीबन इसको बेस बनाकर अपना शरिया कंप्लायंस का आउटपुट देते हैं इकोनॉमिक मैटर्स पर, फाइनेंशियल मैटर्स पर. तो इनके हिसाब से क्या है, आपके पास वही अच्छा, अब यहाँ पर डिविडेंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है बात, यहाँ पर बात हो रही है कि आपके पास शेयर्स कितने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब हैं 100 शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स. कंपनी एक्स का इंटरेस्ट इनकम कितना है, तो हमें पता चला कि उसका इंटरेस्ट इनकम है 500 करोड़ रुपीस, और उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यूड है, तो उसका लेट्स से 1000 करोड़ शेयर्स इश्यूड. तो कैलकुलेशन क्या होगा, दिस 500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा, सॉरी 500 डिवाइडेड बाय 1000, प्लीज जॉट डाउन 0.5, राइट, नहीं 0.2 होगा. okay. 0.5, ठीक है, 0.5 into 100 and that comes to 50, right? Sorry, ये हो गया 50 rupees only. So this is the logic given by AOF standards, right? अब AOF standard के हिसाब से क्या हुआ कि number of shares you hold into interest income divided by total number of shares issued, so we get 50. But what if this is for the entire year, right? What if I do not hold the shares for an entire year, I jump into the bandwagon in June and we are in December, for example. So out of 365 days, I am holding the shares for about 180 days. तो ये तो मैंने सिर्फ आधे साल शेयर्स होल्ड किया. आधे साल शेयर्स होल्ड करने के लिए मैं पूरे साल का प्यूरिफिकेशन क्यों करूं? तो उसके लिए our friendly neighborhood Sharia board in Mumbai, is TASIS. So according to the AOF standards, TASIS came out with yet another addition or an extension to this. They said if it's 180 days, then divide that by 365. If you have invested for 90 days, so 90 divided by 365. And as a result of that, if it's 180 divided by 365, then your 50 rupees would now be just 25 rupees. ठीक है, तो ये और थोड़ी बचत हो जाती है based on AOF standards as well as TASIS addition to it, right? तो TASIS के जो CEO है
MH Khadkare Sahab hai, right? He is from, he has studied from IIT Mumbai, MTech from IIT Mumbai. Then he did his MBA, and he is an intellectual par excellence. He is my ustad, right? I have learned a lot from him. In my early days, I used to visit his office, and he would explain how Islamic finance works one-to-one, one-on-one basis पर मुझे वो सिखाते थे. Or, you know, that's how I started my career and so on. So, you know, so I have a kind of a relatedness with him, which is very different, right? तो उस related, अब intellectuals होते हैं, तो intellectuals थोड़ा सा, you know, थोड़ा सा एक अलग किस्म का उनका मिजाज होता है, तो वो बहुत ज्यादा बाल की खाल भी निकालते हैं. तो MH ने भी जो है उस तरीके से, मैं उनके फेस पर भी बोल सकता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से ये बाल की खाल निकाली है, और ये उन्होंने एक एडिशन किया है जिससे हमारी थोड़ी सी बचत हो गई है. लेकिन अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी दे दें, राइट? 25 रुपए के बजाय 50 रुपए दे दें इंशाल्लाह. चूंकि ये इंटरेस्ट का मामला है तो कुछ सवाब तो नहीं होगा, लेकिन जान छूटेगी थोड़ा सा. तो उस लिहाज से दिस इज a process that can be followed. So whatever you choose to follow, you can follow, right? Now let's look at this whole scenario a bit practically. तो प्रैक्टिकली आप सबको मेरे स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक पोर्टफोलियो, एक P&L स्टेटमेंट एक्चुअली बोल सकते हैं, राइट? सो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, इंफोसिस, सम ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, किसी ने खरीदा 1 अप्रैल 2020 को, राइट? 1 अप्रैल 2020 को जब कोविड हो गया और मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने लगी, तो इन्होंने मारी एंट्री, राइट? 3,46,000 का इन्वेस्टमेंट किया. फिर 24 अक्टूबर 2020 आया, इनको खुद को कोविड हो गया, हॉस्पिटल का भारी बिल भरना पड़ा, तो सारे शेयर्स बेच दिए, राइट? तो एक साथ 24 तारीख को ये सारे शेयर्स बिक गए और बचे 5 लाख. अब जो शेयर्स मिले 5,39,000. तो हुआ क्या? इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2020 से लेकर 24 अक्टूबर 2020 would make 206 days of holding, right? अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर? इंटरेस्ट इनकम 117 करोड़ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, 107.95 करोड़ एशियन पेंट्स, 195, 637, 511 Infosys, TCS, सबका ये this is all the interest income of these companies. Divide that by issued shares, total number of shares issued, right? Number of shares held by the investor 50, whatever. So 50 into 117 divided by 234 into 206 divided by 365, the purification amount comes to rupees 14.05, 31.76, 12.91, 106.28, and so on. Total amount of purification on the original investment of 3,46,700, profit के साथ इतना, but the total purification for those almost 7 months is 569 rupees 82 paise. So this is the purification amount that needs to be given away in charity, right? So yeah, that's what we need to understand. Now, inshallah, I will be sharing. Achha, where do I get all of this from? So for that, I will take you to another place, right? I will stop the share और हम चलते हैं एक वेबसाइट की तरफ, right? And I will show you how can we find all of this information.
ठीक है. So we will go to a website called Screener. स्क्रीनर पे जाकर हम एक स्क्रीनर, ये पेड सर्विस भी है, फ्री सर्विस भी है. ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, ये स्क्रीनर पर भी आपको, अब ये फ्री सर्विस में भी आपको मिल जाएगा, राइट. तो इस पे आप जाकर एक फॉर्मूला खुद बना सकते हैं. यू नो, एट इदाफा इन्वेस्टमेंट्स आवर फोकस इज कि किस तरीके से हम आपको उस लेवल की ट्रेनिंग दे कि आपको प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स के क्रचेस की जरूरत ना पड़े. आप आत्मनिर्भर हो जाएं, राइट. आप एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर हो जाएं, राइट. और उस खुद मुख्तार इन्वेस्टर के लिए क्या क्या टूल जरूरी है, वो सब हम आपको पूरे तौर पर देने की कोशिश करते हैं. तो हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. लेकिन ये जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम इन द प्रीसीडिंग ईयर, राइट. तो इंटरेस्ट इनकम इन द प्रीसीडिंग ईयर and interest in the preceding year, and we also want to find out what was the shares issued. So number of equity shares in the preceding year, right. ये दो queries हमें find out करना है, और इसको find out करते हैं हम, ये run करते हैं query, और हमें यहाँ पर मिल जाता है कि interest प्रीवियस ईयर में और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रीवियस ईयर में. अब मुझे कुछ कंपनीज ढूंढनी है. यहाँ 3221 कंपनीज है, राइट. सो आई वांट द कंपनीज, आई कैन सर्च फॉर द कंपनीज. मेरे पास फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो मैं जाऊंगा मार्केट कैपिटल. स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड. स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, ओके, सॉरी. इतनी देर, अच्छा, you didn't see the formula and all of that? No, we just from 2 or 3 minutes. Let me take it. Yeah. I'll show you the formula again. We could go to the query, you know, so we go over here. Tools, create a stock screen, right? We say interest in the preceding year, and then we say, why preceding year? Because हमको पिछले साल का हिसाब करना है ना अभी. So preceding year, and shares, number of equity shares in the preceding year, right. We say run this query and we get this result. 3221 कंपनीज हमको मिल गई. अब मैं क्या करता हूं, मैं आमतौर पर, हम लोग अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारी डिटेल्स तो मुझे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा. मैंने शेयर्स कब खरीदे, कितने में खरीदे, कब बेचे, कितने में बेचे, कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंजल ब्रोकिंग या आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको वो दे देगा. उस स्टेटमेंट के आगे हम ये और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे. तो हम क्या ऐड करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का 118 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 216 करोड़. तो ये दोनों हमने ले लिया. अपना फॉर्मूला भी वहां तैयार है, वो फॉर्मूला भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट. ये पूरा प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह. सो if you have given your email to us, inshallah we will send the presentation to you. It will be shared with all of you. If you haven't shared the email, please share it in the chat box so we can share the presentation with you. तो ये सारा फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा. आप यहाँ जाकर अपना शेयर, अपना खुद अपने तरीके से आप जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना पर्जिंग का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. ज़कात भी आप कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी इसी तरीके से स्क्रीनर के सहारे से किया जा सकता है, राइट. नाउ लेट्स मूव बैक टू व्हाट वी वर. सो व्हाट नेक्स्ट. अब अगर आपको पर्जिंग करवाना, तो एक तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, राइट. You have the entire way of how to go about doing that, completely free of cost, right. Completely free of cost आप ये कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, आप टासिस के साथ, टासिस जो है 500 रुपीज प्लस, 500 रुपीज से स्टार्ट करती है, प्लस जीएसटी होता है, और उसके अलावा
वो जो है, और जैसे आपके पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो वो ज्यादा फीस चार्ज करेगी। टासीज ये सर्विस प्यूरिफिकेशन का प्रोवाइड करती है। सो टासीज का तो बहुत स्ट्रिक्ट एकदम वो जो है माइन्यूट डिटेल में जाकर करता है, परफेक्ट तरीका है। दैट इज आवर ऑप्शन। वी कैन गिव यू डिटेल्स ऑफ टासीज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट। द अदर ऑप्शन इज islamically.com पर जाकर आप ये सर्विस ले सकते हैं। सो islamically.com का एनुअल सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपीज है। हमारी टीम आपके साथ अभी एक लिंक शेयर करेगी, वो लिंक पर जाकर आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो यही सर्विस आपको मिलेगी 999 रुपीज में, राइट? सो यू कैन सब्सक्राइब टू इस्लामिकली नॉट फॉर ओरिजिनल प्राइस उसका 7,000 है, वो डिस्काउंट देते हैं 3,500 रुपीज पे ऑफर करते हैं। बट इदाफा के साथ हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट उनके साथ किया है। दे ऑफर इट ओनली फॉर 1,000 रुपीज, 999 रुपीज। So if you subscribe to islamically.com on the link that we have given, 999, and Islamically पर dividend based method पर पूरा का पूरा purification वो साथ में आपको करके दे देते हैं। You just give your portfolio over there, they do the complete work for you. And finally, Idafa Investments, you can sign up with us. We have an offer going on where we give free purification up to 5 shares. Beyond 5 shares, there are certain charges that we do charge, but that is completely free of cost up to 5 shares. And then there is a free offer that we are giving, 1ka3 offer. You can start the Sharia compliant investment. What do you get? A free demat account, a free ticket to the course, how to make 1 crore by investing the Sharia way. ये सारे links आपके साथ share कर दिए जाएंगे. So just go ahead, open a demat account free of cost for 1 year. With angel broking, completely free of cost. You get this course completely free of cost, and we create. So in this course, 1 crore formula, हम एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि अगले 5 से 7 साल में आप कैसे 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। बड़ी आसानी से आप 20 साल में, 19 साल में 1 करोड़ रुपए तो बना सकते हैं अगर ये स्ट्रेटजी को आराम से आप फॉलो करें। लेकिन इसके अंदर अगर हम एक ट्विस्ट लेकर आए तो यही चीज हम 5 से 7 साल में बड़ी तेजी से बना सकते हैं। और उस स्ट्रेटजी के अंदर ये एक बास्केट क्रिएट करना इज द बेसिक, राइट? तो उसमें एक बास्केट क्रिएट कर देते हैं जिसके जरिए से हर महीने आपका एक इन्वेस्टमेंट होते रहेगा और कंपाउंडिंग रिटर्न। तो ये बास्केट हम आपको फ्री में क्रिएट करके देते हैं। तो ये एक ऑफर चल रहा है, जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। गो अहेड, ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अस। आपकी प्यूरिफिकेशन वगैरह का काम भी हम कर लेंगे। आजादी क्या है? आजादी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम खुद मुख्तार करने की आपको कोशिश करते हैं। इसका नाम खुद मुख्तार होना चाहिए था आजादी की बजाय, क्योंकि आजादी की वजह से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमसे, राइट? तो मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये ना कश्मीर के बारे में है, ना कन्हैया कुमार के बारे में, ना सीए के बारे में, राइट? ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, राइट? तो ये आजादी के तहत हम कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं, कुछ फ्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, कुछ पेड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो ये सारे ऑफर्स हैं हमारे। एक जो प्रोग्राम हम ऑफर करने जा रहे हैं वो है ये 1 करोड़ फॉर्मूला। ये इसमें बेसिक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, बस्टिंग स्टॉक मार्केट मिथ्स, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस हम कवर करते हैं, पावरफुल टूल्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, और हम सबसे इंपॉर्टेंट ये 1 करोड़ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, कैसे अगले 5 से 7 साल में आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, राइट? ये कोर्स 4 दिन का कोर्स है। 4 दिन 18, 19, 20, 21 ये होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मई 2021 के अंदर। ये रोज मगरिब के बाद 7:30 बजे शुरू होगा, 9 बजे तक चलेगा, इसी तरीके से जूम पर। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। रोज के आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे जो आपका आधा घंटा से पौना घंटा लेगा। वो असाइनमेंट करके आपको नेक्स्ट डे आना है और फिर से एक नए कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट डे और कुछ असाइनमेंट, फिर एक नया कंसेप्ट, और उस तरीके से हम 4 दिन में ये सीखते हैं कि किस तरीके से आप 1 करोड़ रुपीस 5 से 7 साल में बना सकते हैं। ये ओरिजिनल कॉस्ट इस प्रोग्राम का 3,000 रुपए है, लेकिन हम इसको 499 में ऑफर करते हैं। अगर आप चूज करते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, मुझे मजीद डीमैट ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है,
फ्री में दो तो भी मुझे जरूरत नहीं है। तो वैसी सूरत में आप 499 भर के आज अगर रजिस्टर करेंगे उस लिंक पर, तो 499 में आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ खुलवा लिया तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। आपका काम क्या है कि उस क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान 500 रुपए देकर आपको रजिस्टर करना है, या एंजल ब्रोकिंग के अंदर जाकर आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन 5-10 मिनट में हो जाता है आमतौर पर। अगर वो किसी वजह से नहीं भी होता है तो वी विल रिवर्ट बैक टू यू। जस्ट मेक श्योर कि रेफरल कोड में IDA, इदाफा इन्वेस्टमेंट्स का IDA रेफरल कोड लिखा हो, ताकि हम आपके साथ फॉलो अप करके आपको सपोर्ट कर सकें। नाउ where do we go from here? The journey of 1,000 miles starts with one step, right? What is that step? Please go ahead, register yourself, get engaged, get involved, and inshallah ये सफर जो है हम साथ में तय करेंगे। पिछले कई सालों से कई लोग हमारे साथ ये सफर तय करते हुए आए हैं, और कुछ लोगों ने बड़े जबरदस्त अंदाज में वेल्थ क्रिएट किया है। पिछले महीने 40-45 दिन पहले मैं एक अपने बहुत पुराने दोस्त से मिला, राइट? उन्होंने यही काम शुरू कर दिया था 2001-2002 की बात है। उन्होंने इस तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और माशा अल्लाह आज अंधेरी के अंदर उन्होंने मुझे, एक्चुअली ही टुक मी, बिकॉज आई वाज इन अंधेरी, ही इनवाइटेड मी ओवर, ही टुक मी टू हिज हाउस, यू नो, एंड ही सेड कि दिस इज द आउटकम ऑफ 4 BHK अपार्टमेंट अंधेरी मेट्रो स्टेशन। वो कौन सा मेट्रो स्टेशन है? चकाला मेट्रो स्टेशन के पास। ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, राइट? तो मतलब जब मैंने वो घर देखा, the kind of effort he had put in all those years, I was like completely in awe कि ये results भी मिल सकते हैं। There is a lady, now she's really elderly now, very ज़ईफ। उन्होंने इसी इन्वेस्टमेंट के जरिए से बॉम्बे के अंदर, साउथ बॉम्बे के अंदर अपने 4 बच्चों के लिए एक अपार्टमेंट खरीद कर उनको दिया। ऑल द मनी मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। दिस इज द वे टू गो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। शरिया कंप्लायंट भी है, उसमें प्यूरिफिकेशन करके आप सारा बात कर सकते हैं, और ये पूरे के पूरे आपके एफर्ट्स को, पूरे इन्वेस्टमेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर। और इन द मीन टाइम मैं जो है कई सारे सवाल हैं उनके जवाब दे देता हूँ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, perfect. There are a lot of questions. We will answer all of them, inshallah. All right. Alhamdulillah. Yeah, so there's a good question. Isn't someone who has just savings of 45,000, he has saved 45,000 in the year, and he's poor enough and actually should be a recipient rather than donor? He can be a recipient, right? So there are 2 ways. One is the gold criteria, one is the silver criteria. So as far as the recipient is concerned, the gold criteria applies, right? But there are a lot of people जिनके पास 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, just managed to reach 3 lakh rupees. But because of the gold criteria, they are like, they cannot give zakat. So ऐसी situation में the scholars have told that you go by the silver criteria and go ahead and give your zakat, no problem. Take that opportunity and give the zakat, right? So when it comes to giving zakat, the silver criteria applies. When it comes to the recipient, a lot of leeway. अगर आपके पास 2.25 लाख रुपए नहीं है, तो you can be a recipient, right? And actually there are other scholars who say that even if you have a much greater need, you know, अगर 8-10 लाख की scholarship की आपको जरूरत है, and so on, then the community can give such a person who is a deserving person from zakat even beyond
that 3 लाख क्राइटेरिया। तो उसने जोड़ तोड़कर 4 लाख जमा कर लिए, लेकिन अभी भी उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो मजीद 6 लाख रुपए जक़ात में उसको दिया जा सकता है according to some scholars. So even that option is there if someone chooses to go for it. Okay, all right, I can see a lot of amens for that treasure hunt. Okay, rental deposit, yes, rental deposit के ऊपर भी ज़कात देनी होती है, right? Rental deposit पर भी ज़कात calculate करके देनी होती है। Chit fund halal or not, that's a different question. Chit fund halal तरीके से भी किया जा सकता है. So if there is no interest involved, no extra payment than what you have given, etc., then it can be done in a halal way. In fact, one of my friend, Saif Ahmed, he runs a halal chit fund in Bangalore. It's been a long time I've connected with him. I don't remember his name. Saif Ahmed, Infinity Consultants or Infinity Solutions. He offers a halal chit fund out of Bangalore. बिस्सी में 50,000 पे किया है अभी तक, 1 लाख की बिस्सी है, 50,000 पर निकालना बैलेंस। हाँ, right. Very good question. 50,000 paid, eventually it is going to be how much? 50,000 की बिस्सी है, यानी 1 लाख का इवेंचुअली वो सम 50,000 के हिसाब से साल भर में 6 लाख होंगे, और उससे आगे और बढ़ेंगे तो 1 लाख होंगे, राइट? तो वैसे है, ठीक है। अब इसका सवाल ये है कि ये 1 लाख रुपए की बिस्सी बनती है, अभी तक 50,000 रुपए दिए हैं और 50,000 रुपए बाकी हैं, राइट? तो इस पे अब ज़कात का कैलकुलेशन कैसा होगा? So what you have already paid will be calculated in your assets. जो आपके 50,000 रुपए जमा हो गए हैं वो आपके एसेट में गिना जाएगा, राइट? और उसके ऊपर ज़कात का कैलकुलेशन होगा। अब जो 50,000 रुपए बाकी हैं वो आपकी लायबिलिटी है, राइट? वो आपकी लायबिलिटी है। तो इसको आप जिस तरीके से पर्सनल लोन डिडक्ट करते हैं, तो ये बिस्सी की बाकी लायबिलिटी, या आपका कोई एक लोन चल रहा है और आपने अपने दोस्त से या अपने फैमिली मेंबर से कहा है कि भाई मैं आपको ये लोन जो है वो 10-10 हजार रुपए करके साल भर में निपटा दूंगा, राइट? तो वो साल भर का जो 1 लाख रुपया बनता है या अब बचा हुआ 80,000 रुपया बनता है, वो भी आपके टोटल ज़कात कैलकुलेशन में से माइनस हो जाएगा। तो टोटल ज़कात कैलकुलेशन 5 लाख रुपीज हुआ, उसमें से ये 50,000 रुपए की बिस्सी की बाकी रकम, 80,000 रुपए का वो जो लोन का भरपाई करना है महीना महीना 10,000, वो सारा का सारा कैलकुलेट होकर वो उसमें से डिडक्ट होगा और बाकी की रकम पर आपको ज़कात भरना है। What about ज़कात on gold coins and biscuits? तो उसके ऊपर you need to pay ज़कात at 2.5% if you have you have some gold coin and if you've added some more. ये जो नया गोल्ड कॉइन आपने ऐड किया है, इसको अगर पूरा 1 साल नहीं हुआ है तो वैसी सूरत में आप उसको जो है उस पे 1 साल कंप्लीट होने पर ज़कात देंगे, लेकिन वो सारा चीज फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पास कैश था, उससे आपने गोल्ड खरीदा, पहले से तो वो कैश पड़ा हुआ था आपके पास, राइट? तो वो कैश अगर आपके पास साल भर से ज्यादा है और उसको आपने गोल्ड में तब्दील किया, तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ दैट सेम पैकेज। पूरे वेल्थ के ऊपर आप कैलकुलेट करके 2.5% दे दीजिए, वो ज्यादा मुनासिब होगा। ऑल राइट, yes brother Azhar Sheikh, yes, zakat does apply on shares। तभी हमने ये प्रोग्राम खास किया कि वो शेयर्स के ऊपर जो ज़कात होता है म्यूचुअल फंड पे होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वही हमने आज देखा है, राइट? शायद आप थोड़ा सा लेट हो गए थे। ऑल राइट, नो ज़कात ऑन बिजनेस लोन, व्हाट अबाउट या नो ज़कात ऑन, मतलब business loan will not get deducted from your zakat calculation. Your personal loan will get deducted, but business loan will not get deducted
and that is the opinion of most of the scholars. There are some scholars, especially the Ahle Hadith scholars, the Salafi scholars, who are all of the opinion, no deductions at all. आपका एसेट बनता है 5 लाख रुपए का, आपके पास 80,000 का लोन है, 50,000 की बिस्सी है, सब साइड पर, नो डिडक्शंस, गिव स्ट्रेट अवे ऑन दैट 5 लाख रुपीस। आप बोलेंगे अरे लेकिन ये तो लायबिलिटी है, बोले लायबिलिटी, ये पैसे से लायबिलिटी क्लियर करो और बाकी के अमाउंट पर ज़कात दे दो। So that's the opinion of some of the scholars. So depending on what you prefer to follow, which school of thought, yeah, how much is long? That's a good question. So when we say long over here, we're talking about type of investments. You know, when you've decided that I'm not going, this is my own company, right? Idafa Investments is my own company. I'm not going to sell it off in the next 5, 10 years, 15, 20 years, right? I would rather have my kids take it over from me and run it even more professionally than I'm doing, right? So that's the plan as far as I'm concerned. Similarly, if I'm holding on to some shares, Wipro or HCL or Hindustan Unilever, and I plan that my kids will take it over and they will benefit from it, my grandchildren will benefit from it. If that is my intention, that is long. वैसे सिचुएशन में आप करंट एसेट्स पर देंगे। अदरवाइज आप 10-15 साल में अगर इरादा है कि इतना प्रॉफिट हुआ तो बेच दूंगा, ये आपके जहन में बात आ गई है, तो that is not long term and you need to pay on the market value. Zakat on gold coins, that's done. So gold coins पर देना है। Ashraf, I had one question. कि जैसे आपने डिडक्शन का बताया कि अगर कोई पर्सनल लोन है, फॉर एग्जांपल कार लोन है 15 लाख का, राइट? तो हम इस साल डिडक्ट कर रहे हैं, तो हम हर साल तो नहीं करेंगे ना डिडक्ट, क्योंकि वंस अगर कैलकुलेट करें कि अगर हमारे पास 18 लाख कैश है, एफडी एंड एवरीथिंग, हम 15 लाख कार लोन पे कर देते हैं एंड वी आर एलिजिबल फॉर 3 लाख ओनली, राइट? तो नो वन कैन, कि हर साल तो लोग नहीं कर सकेंगे ना उसमें से पर्सनल लोन वाला डिडक्शन। वन टाइम पे करके तो क्लियर कर सकते हैं ना, जैसे हम अगर हर साल वो क्लियर करने जाएगा तो वो पर्सनल लोन तो हर साल वो डिडक्ट नहीं करेगा। नहीं, अगर जैसे है, देखिए बेस्ट चीज तो यही है कि 18 लाख में से आप 10 लाख दे दो या वट एवर द अमाउंट इज, कि 10 लाख का लोन है, 18 लाख आपका एसेट बनता है, तो आप उसमें से ये क्लियर कर दो और बाकी के अमाउंट पर ज़कात दे, दैट्स द बेस्ट थिंग। बट फॉर वॉट एवर रीजन, अगर किसी के पास इस तरीके से कोई लोन है और वो पॉसिबल, जैसे कितने होम लोन्स के लिए जाते हैं, उसमें पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप चाहें तो भी क्लियर नहीं कर सकते, राइट? तो उस किस्म का अगर वो पर्सनल लोन है तो वो डिडक्शन ले सकता है ज़कात में से, लेकिन बिजनेस लोन है तो नहीं ले सकता। बेस्ट, जैसे आपने बताया, पे ऑफ द लोन, बैलेंस पर ज़कात दे दो, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? Did I get the question right? Yes, yes. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये जो बैंक में जो हमारा अकाउंट है और उसमें जो इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव जमा होता है, हाँ, तो भी हमको प्योर करना पड़ेगा, उसका कैसा करेंगे? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ये इंटरेस्ट भी, और यहाँ पर भी जो हमने फाइंड आउट किया, जैसे हमने वो शीट पर देखा 400 and some rupees, राइट? राइट, तो वो, और फिर इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमारे अकाउंट्स में आ जाता है, तो वो सबको कैसे डील करना है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसको डील करने के लिए तरीका ये है कि यू ऑट टू गेट rid of that amount ASAP, as soon as possible, जल्दी हो सके, बस आप वो अमाउंट को निकाल कर उसको चैरिटी कर दीजिए। अब चैरिटी अच्छी जगह पर, जैसे आजकल कोविड का इतना सब चला हुआ है, तो बहुत सारे इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप वो कोविड के केस में उस तरीके से कोई चैरिटी कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप देखें तो बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग चीज बताते हैं, सालों से कुछ चीजें आ रही है, जैसे कि
आप रास्ता बनाने के लिए दे दीजिए, मस्जिद के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए दे दीजिए। लेकिन जब वो मस्जिद के अंदर टॉयलेट बताया तो बनाने के लिए दे, तो ये भी आप हिदायत दीजिएगा कि बहुत फैंसी टॉयलेट नहीं बनाए, बेसिक बनाए, राइट, नहीं तो पता चला कि वो किसी ने मुझे एक जमाने में किसी ने बताया था मुझे ऐसी बातचीत करते करते कि ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ना, इससे हम फुटवेयर खरीद सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। तो मतलब फुटवेयर खरीद सकते हैं क्या? मतलब मैं भी जरा नौजवान था, अभी भी जवान हूँ वैसे, लेकिन वो नौजवानी के दिन थे, मस्ती भी ज्यादा सूझती थी। तो मैं बोला अच्छा अच्छा अच्छा, फुटवेयर खरीद सकते, चप्पल वप्पल खरीद सकते हैं क्या? तो नाइकी के जूते उस जमाने में कुछ मिल रहे थे 3,500-4,000 रुपए के। तो मैं बोला वो इंटरेस्ट के पैसे से किसी से मांग लूँ, हो जाएगा काम, राइट? तो वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल जब हम ये इस तरीके से, तो द आइडिया इज कि अगर आपको कोई ऐसा जरूरतमंद दिखता है उसको दे दीजिए जल्दी से। कुछ इदारे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, तो उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, गुड यू रेज दिस। बी ह्यूमन फाउंडेशन एक इदारा है, पिछले साल 12 लाख से ज्यादा मील्स जो है वो शेयर किया गया था बॉम्बे के अंदर, राइट। तो बी ह्यूमन फाउंडेशन के अंदर अगर आप चाहें, आई होप दिस इज द वन, राइट। सो नहीं, ये वो राइट। सो बी ह्यूमन फाउंडेशन है, देयर इज ग्लोबल ग्लोबल केयर फाउंडेशन एक है। सो दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग चैरिटीज जिसको आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग योर बीइंग ह्यूमन सलमान खान वाला नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बी ह्यूमन फाउंडेशन and so you can support these kind of organization. ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है उसका काम है जेल के अंदर से कैदियों को छुड़ाना, जेल के अंदर आते हैं उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट, तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू योर through the interest amount. So the whole idea is just give it to whoever is an appropriate recipient as soon as possible. All right. Global Care Foundation जो है उसका काम है के अंदर से कैदियों को छुड़ाना, के अंदर आप कंट्रीब्यूट, ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू योर ओके the voice rebound to whoever is appropriate as soon as. All right. This is recording is played back. Someone has recorded it. yeah, I think ये फेसबुक का कुछ रिबाउंड हो रहा है। All right. I think this should get resolved now. Okay. So effectively it's 12:30. The session is over, and yeah, those links are shared over there. So the session is practically over, but I'm going to keep responding to the queries. All of the questions I will respond to them, and those who need to leave for some urgent work, etc., you can leave. But if your questions are unanswered, you can definitely stay on. Inshallah, I'll respond to all the queries. All right. Let me take the next question on the screen, on the chat. Right. Yeah, some very interesting questions over here. So if you really want to learn, please hold on. बहुत amazing questions here. Right. Okay. Right.
One more, अच्छा, so हमने और एक portfolio method का example दिया था. Just take your complete portfolio statement. What are you holding today? Take the valuation of your holding. It comes to 5 lakh rupees. That's the portfolio value, 2.5% on 5 lakh rupees, and that's it. Does one have to pay zakat if the investment value is less than nisab? If it's less than the nisab threshold, then you need not pay the zakat. But the whole question is, what is the nisab that you hold? The silver nisab is 45,000 rupees. The gold nisab is around 3,80,000 rupees. So which one do you go with? You know, so that's more important. So when it's come to paying, it's better to go with the silver nisab, and that way you can participate in this great act of zakat. Is there any easy way to calculate zakat on investment long term? Very easy. Just take the list of your shares, number of shares, value of shares. That way you get the total value of your shares, 2.5% on that, and that's it. Zakat calculation is very easy, 2.5% on that. Long term is also very easy. You just need to list your, so Ashraf bhai, maybe we can give a practical example whenever we meet next, but it's very simple. Name of the shares, number of shares you are holding, right? So just as in the portfolio profit and loss statement, against that you can put up the current assets, right? Current assets divided by number of shares issued, like we did for interest income. Current assets divided by total number of shares issued, and then you can run the formula or do the calculation one by one, or just run the formula. You will get the output that the current assets per share is so and so. That current assets per share has to be multiplied. So that is your into the number of shares is the payable amount. The zakat calculated to be done on that amount, and 2.5% on that. It's very simple. Can you give an example for an investor like Muhammad Anwar, who has just made 1 crore and has some 10,000 shares? How much should he pay as zakat? Good question. So he has 1 crore rupees and has some. So if he has made 1 crore rupees, then he pays zakat on that. If he has 10,000 shares into the value of Wipro, समझो 750 रुपए है, right? So 750 into 10,000 shares, 75 lakhs into 2.5%, 1,87,500. That's it. So if he's holding for a long term, if he's holding for a long term, then not even liquidated even a stock. we have to go to the balance sheet. We have to look at the net assets, the current assets of Wipro on the balance sheet asset side. Take the current asset amount, divided that by total number of shares issued by Wipro. We come to a conclusion, multiply that by 10,000, and that's how we reach the zakat, right? Okay, can you please log out on, okay, this is, okay. Heavy deposit room पे zakat, yes, heavy deposit पर जो room है, पहले तो heavy deposit आप ये अपने scholar से, अपने जो आपके करीब में मुफ्ती हों, जो आपके उनसे आप जरा सा ये पहले चेक कर लीजिए कि heavy deposit पर घर लेना ये अलाउड है या नहीं, राइट? क्योंकि हैवी डिपॉजिट पर जो आप रेंट बचाते हैं, वो रेंट वो आपको जो रहने दिया जाता है, तो आपने किसी को, हैवी डिपॉजिट क्या है, आपने किसी को कर्ज दिया, डिपॉजिट दिया, कर्ज दिया, उसके एवज में वो आपको अपना मकान दे देता है। तो कर्ज के अगेंस्ट कोई भी अगर फायदा होता है तो वो जायज नहीं होता है, वो रिबा में शुमार होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है
कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, आप उस शख्स के छत के अंदर धूप से बचने के लिए उसके छत के साये में पनाह भी अगर लेते हो तो वो भी रिबा है, राइट। कोई गिफ्ट विफ्ट लेना देना तो दूर की बात, तो गिफ्ट लेना देना भी जायज नहीं है। तो ये पूरा का पूरा घर इस्तेमाल करना अगेंस्ट दैट कर्ज, ये जायज नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप खुलासा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट दिया है जो वापस आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह, तो वैसे डिपॉजिट पर आपको 2.5% ज़कात देनी होती है। ऑल राइट, इज ज़कात Fixed deposit is totally haram, right? सॉरी Fixed deposit, FD यानी कि totally haram, right? all kind of interest bearing investments, fixed deposits, PPF, post office, bonds, debentures, all of that is haram. Okay, is zakat applicable on investment portfolio or current portfolio? It is on current portfolio. It is applicable on your invested current portfolio, both, right? Invested is current, current is invested. All right. Oh, if a portfolio is of X lakh and we had profit of Y amount last year, so do we need to consider profit as well? Profit becomes a part of that portfolio. Generally, we take it that way. If you had removed the profit and used it up, then forget it. No problem. Nothing to worry about on that. One more deduction, auto loan. I think that I've answered. Okay. All right. Recording, inshallah. Recording is available on Facebook Live, Brother Danish. All right. So this is that a, no, that's the purification would happen annually, right? That needs to be done annually, every year. We don't realize any income until we get dividend or sell the shares, right? Irrespective, if you are invested in a company, so if from the dividend formula, that's perfectly fine. But otherwise, according to the AOFI norms as well as the TASIS thing, if you are invested in a company, you own that company to the extent of your shares. And if that company, and in other words, you are making interest money to the tune of whatever amount, 50 rupees, 500 rupees, 25 rupees, then you need to give that, you need to get that out of your system, right? So the dividend formula is fine, but more and more scholars are now shifting towards the EOFI norm because that is more widely accepted and times have changed. So people have moved on and they've adopted the new formula, right? I hope that answers the question. If company already Sharia compliant, still need, yeah, that's right. If the company is not Sharia compliant, you ought to get rid of that investment in the first place. If the company is Sharia compliant, then you have that 1%, 2%, up to 3% or up to 5% interest income coming into your system, you know, so you need to purify that. And not the dividend. I mean, if you follow the dividend thing, then it's a dividend. Otherwise, the whole thing. How to check interest income of company? So we, one of the ways of doing that is on Screener. The other way is you download the balance sheet, go through those, you know, things, and then other income, schedule or notes of the other income, and you find exactly what is the interest income amount, right? But Screener has made it convenient. So you just run that formula and you can go through the recording again where I've discussed how to see the formula. Screener.in, very self-explanatory site. And if you are already Azadi students, next, etc., inshallah, you can raise this question in one of our follow-up sessions and we'll respond to that. Is only for the dividend income? No, the purification has to be done besides the dividend income. That's one way of doing it. The other way is, irrespective of whether you get dividend or do not get any dividends, you need to do the purification. All right. Do we have any other questions? Okay.
for free demat account, please. Okay, that's done. And then once, okay, is purging only for dividend income or does it apply to overall portfolio? So it's for overall portfolio, irrespective of whether you receive dividend or not. What if the money is not stable for 1 year? Rolling, coming and going. Coming and going, if saving it for the whole, there is no zakat. That so where is it coming and going? So it's coming in some form of income. You received 1 lakh. It's going your cash flow negative. You're putting it in your bank account 50,000. So if it's going just within, you lend it to someone, you're supposed to get it back in 2 months, then you get it back, then back to. So in that, the money is yours in different shapes and sizes. It's not in cash form, it's gold form, it's a bank form, it's in a form. So you need to track that 1 lakh that you earned, and is it within that system for that 1 year? In the system, in one form of saving or the other, then you need to pay zakat on that. But if you spent it, if you've spent it on your household expenses, then no zakat on that. I hope that's clear, Safir bhai. Sister Aisha, this is we'll take that offline, inshallah. Inshallah. Or should we take it online? All right, we'll take it offline, no problem. Do we have to purge dividend income as well as total income from shares? Do we have to purge dividend income as no? We don't have to purge the dividend income if you are taking care of the purification on the overall portfolio. But if we plan to do the purging on the dividend received, then that's the thing that we have to do. So it's either dividend or from your entire portfolio, right? Can we buy shares of those who Islamically chose as Sharia? Yeah, if you're buying shares using Islamically, then follow their norms in its entirety. Then, whenever they say this company has become non-compliant, you must quit that. Whenever they say this is compliant, you must keep following that. The kind of criteria they mention for purging, follow that as well. So just follow Islamically completely. It happens at times, that people see that a particular share is not compliant on Islamically. We just had that case last week in one of our follow-up sessions, right? So one of the share, it's not compliant on Islamically, and now it's compliant on TASIS. So generally TASIS is strict and Islamically is moderate, it's liberal. But here ulta ho gaya. So now everyone was kind of, considering ke ab TASIS mein jump mare ya kya. So if you are at one set of Sharia scholars, stay with them, just stay with them. Okay. Similarly, I'm a trustee. Right. So let's get this sorted. If I am a trustee on behalf of a minor, then minor, is minor required to pay zakat? I think we'll take this offline. If there was Mufti Ali Dada online, he would have answered the question. Yeah, the recording is available on Facebook Live, on Facebook, inshallah. Do we have zakat on PF and when should it be paid? Very good question. Zakat on PF, your provident fund, it's getting accumulated, right? And there is an interest component and there is your right, your share, which is halal and tayyab, and there is an interest component.
You plan to give away that interest without fail. You have no doubt about that. So that you just leave it out on your component, on your part of the PF. You ought to give zakat every year because that money belongs to you. You are absolutely clear that you're going to get it. So you need to pay that zakat year after year, every year, right? Okay, can we give bank accumulated interest money in income tax? Afzal bhai, you are from Mumbai. Excellent. I know. ये ऐसे सवाल मुंबई वाले ही करते हैं, right? मुंबई वाले डेढ़ शाणे होते हैं, तो ये ऐसे सवाल वही करते हैं कि इनकम टैक्स चुकाने के लिए क्या हम इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं। हाँ, तो कुछ कॉलर्स ने इजाजत दी है, ये कर सकते हैं। यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, राइट? ठीक है। I asked the same question. Yeah, go ahead, use that, no problem. Have fun. Is it important to inform the person because this is bank interest that I am giving out? Can this amount be given to a widow? Yeah, give it to anyone. Give it to anyone, no problem. If you feel that by giving this money, the person could get hurt, very well-to-do, respectable people, well-dressed people were lining up on the road when distribution of food was going on by our NGOs and, very, very respected people, right? Now, if you're going to tell that person that, what, this is interest money or this is sadaqah or this is whatever, that person already he is going through a lot of a sense of being able to raise money on his family, and he's kind of lining up to get that food. और उस पर से आप और करेंगे कि भाई ये it's not an appropriate, so you just give it away without having and so on. हाँ, zakat है तो it's a different situation altogether. When it comes to interest and all of this, get rid of it. If there's a widow, old lady, young lady in distress, anyone, just give it to anyone, any needy person, Muslim, non-Muslim, anyone, just give it away, get rid of it. All right. PF and gratuity, jawab de diya. What about ethical mutual funds? How can we do? Oh, excellent. Adil bhai, great question. So, क्या करें? एक तो ये कि इसके लिए भी तासीस जो है वो 500 रुपए चार्ज करती है for giving you an advice on mutual funds. I had a word with my guru, my ustad, M.H. Khatkade Sahab, who's the CEO of तासीस, और उन्होंने ये बताया कि आम तौर पर 0.5% of the investment value, आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0.5% अगर आप दे दें तो that more than covers all the impurities. From years and years of doing this work, he has come to the conclusion that it's much lesser, but rounded off to 0.5% works well when it comes to ethical funds, Tata Ethical Fund, Taurus Ethical Fund. When it comes to other funds like thematic funds, etc., it's a different ball game altogether. So there are people who invest in pharma fund, who invest in IT fund, because generally they are Sharia compliant, except for one or two stocks here and there. So in that situation, the purification would be different. But ethical funds, 0.5% is sufficient. Halal way of short selling, that's the strategy that we discussed in the 1 crore formula. If you have registered for the 1 crore formula or this thing, the angel account, etc., and so on, just get in touch with us, 99673-22224. Inshallah, Umar bhai will help you out with that. Do we have to pay on PF? Yes, you have to pay on PF and gratuity. I have, wow, the questions are still pouring in. Alhamdulillah. I have an X amount in my portfolio and I have unrealized profit of Y amount. Should we consider Y amount? Yes, you have to consider Y amount, right? Is purging purification only for that's
done, right? Or Islamically only dividend, otherwise entire portfolio value. It's either or. I invested in sale, came to know it's non-permissible. I sold it off. So the profit earned is halal or haram. If it is halal, how can I? Right, very good, excellent. This is a very good example. When did you buy sale? January. When did you sell sale? March. You got a profit of, say, X amount. So March, you got the news that this is non-compliant, so you sold it off, right? But January se March that it was compliant, so you made the profit in that duration and you sold it off in March. Now, as far as the interest is concerned, January to March pro rata basis, you need to calculate and give it off, and otherwise everything is perfectly fine, right? How do we have to pay zakat? Yes, yes, yes. What about zakat on mutual funds? Yes, you have to pay zakat on mutual funds. 0.5% is sufficient. Zakat on mutual funds is 2.5%. And also you need to do a purification on mutual funds. So once every year on a given date, you calculate the zakat at 2.5% and you also calculate the purification at 0.5%. Overall 3% uthakar charity kar dena hai. Right. How to calculate zakat if salaried person, cause it should stay for one whole year. Yeah, if it doesn't stay with you for one whole year, if you earn 50,000 rupees, January 50,000, February 50,000, March 50,000, April you spend all 1,50,000 rupees, right? So now you have saved nothing since January. April you earn 50,000, and April to December onwards you save the whole amount. Then January, February, March, again in April, you reach April and you try to figure out if the 50,000 of April, is it still there or have you used it up? But you know that with that 50,000 of April, I had bought some shares and those shares are still there. So you have to give that zakat that has remained with you for 1 year. Then you look at May and then June and then July. And what did you did with all of that money? How much did you save? How much did you use? All that you saved, you calculate zakat on that. All that you use is gone. So that is one way of doing it. Following it up month after month, year after year, month to month, year after year. You know, so you need to track your income and expenses on a month-to-month basis, year after year. The easier way is that you just fix one day every year. It could be the 1st of Ramzan, it could be the 1st of Shaban. Just fix that date. What is the portfolio value? What is the bank account? What is the bank balance? What is the cash? What is the gold? What is all of that? What are the loans? Take all of that into consideration. One day, one amount, just give the zakat on that. If you don't want to do that minute calculation month to month every year, right? So the easier way, you end up giving slightly higher zakat, but the easier way of doing this is just pick one day of the year, calculate whatever you hold, and end of the story. How to calculate zakat? Okay, this is done. What about zakat on tax saving ELSS funds? Okay, that's where we need to do some calculation, right? We need to do some calculation. So Atifai, get in touch with us, or inshallah, we'll talk about it, right? Inshallah, get in touch with us. You have my number. Inshallah, we'll help you out. Is there Sharia ETF for investment? There is a Sharia ETF called Nippon India Sharia Beast Exchange Traded Fund ETF. Now, it's exchange traded, not very liquid. So buying becomes a bit of a problem because it's not always available, right? So, but it is there. We do have an ETF. Okay. So that brings us to the end of
the questions. If there are no more questions, does someone else have a question? Do you want to ask a question as such? If there are no questions, then inshallah we will conclude this session. It was great interacting with you. Jazakallahu khairan. And inshallah we look forward to have more such sessions going forward. I think the last Ashara is just around the corner, so nothing happening in the last Ashara, inshallah. But inshallah, 15th May onwards, 17th, 18th May onwards, we'll get back in action. Right, Jazakallah khair. Okay, और एक सवाल है, heavy deposits room पे ज़कात है, उस पे ज़कात देना है आपको, और आपको ये किसी से जानना भी है कि ये जायज़ है कि नहीं इस तरीके से heavy deposit पर, तो किसी मोतबर उलमा से मिले, आप इसके बारे में ज़रा खुलासा कीजिए। और अगर डिपॉजिट पे आपका चल रहा है तो डिपॉजिट के ऊपर तो आपको 2.5% ज़कात देना है, राइट? ठीक है रफीक भाई, ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।